Hello everyone, welcoming all to the new session of GK. So, in our last videos, we have discussed about the Indian river system, and this is the part 2 of Indian river system. So, basically we have to know what is Indian river system. Indian river system is mainly consist of two types. One is our Himalayan rivers, another is our peninsular river system. In our last video we discussed about the Himalayan river system. The Himalayan river system is basically consist of three river system, that is our Indus river system, Ganga river system and Brahmaputra river system. Their rivers and with their tributaries we have discussed about in our last class. So today we'll discuss about the peninsular river system. See, the peninsular river system is the rivers or consist of the rivers which draw water from the rain, but in the case of Himalayan river system, these rivers draw water from the glaciers present in our Himalayan range. तो जो हिमालयन रिवर सिस्टम अच्छी से माने हिमालय जो ग्लेसियर अच्छी से सब थ्रू ही वाटर स्रोत हिसाब से व्यवहार करते जलर उत्स हिसाब से व्यवहार करते से सब रिवर मानक हिमालयन रिवर मानक वर्ष सारा वाटर फ्लो होता है समान क्वांटिटीर होता है कारण जेहेतु ग्लेसियर से सोर्स हिसाब से व्यवहार करते. बट इन द केस ऑफ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम दे ड्रॉ वाटर फ्रॉम द रेन, सो द वाटर इज नॉट मेंटेन थ्रू आउट द ईयर. ओके, जेहेतु से माने रेन तो आम रेनी सीजन नहीं हुए तो रेन जेहेतु से माने रेन वाटर को से वाटर सोर्स हिसाब से यूज करती तो से वर्ष सारा केते गुड़िया नदी रे वर्ष सारा समान परिमाण जल प्रवाहित हुए नहीं. ओके, on the basis of direction of flow the peninsular rivers is classified into two groups. Okay, basis of their flow पेनिनसुलर रिवर्स आमर इंडिया रो पेनिनसुलर जो पार्टा अच्छे राइट साइड रे कौन प्रेजेंट अच्छे बे ऑफ बंगाल एंड इन द लेफ्ट साइड अरेबियन सी. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिरेक्शन द फ्लो डिरेक्शन दीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. One is our east flowing river and another is our west flowing river. Okay, so today we will discuss about the east flowing rivers. Again welcoming all to today's session. Today we will discuss about the east flowing river of peninsular river system. See, the east flowing rivers are fall in the Bay of Bengal where they play at the Bay of Bengal. Okay, and form larger deltas. The east flowing rivers बा जो सब रिवर माने Bay of Bengal रे ड्रेन्स होती से सब रिवर माने कौन फॉर्मेशन करते डेल्टा. बट इन द केस ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे फॉर्म ईस्चुरीज. ओके, when in our we discussed about the west flowing river, in our next video we'll discuss about the west flowing river. In that video we'll discuss briefly about the difference between delta and estuaries, what are the deltas and what are the estuaries. But now we'll discuss about our east flowing rivers. There are so many east flowing rivers, but among them we'll discuss about some major east flowing rivers which are most important from our exam point of view. east flowing river रे बहुत गुड़ाई रिवर प्रेजेंट अच्छी किंतु आमे किछिटा रिवर विषय डिस्कशन करिबा जो गुडाक आम पई इंपोर्टेंट बा हमर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम पे जो थ्रू मेजॉरिटी क्वेश्चन आसी थाए आमे सेही सब रिवर विषय डिस्कस करिबा. सो फर्स्ट इज आवर दामोदर रिवर, सुवर्णरेखा रिवर, महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, Krishna river and Kaveri river. We'll discuss about these 7 rivers in today's video. Okay, let's start. So see, this is the peninsular area of India. Okay, this is our northern plain. So above the northern plain or in the northern plain our Himalayan rivers are flowing. Okay, but in the peninsular area the rivers are flowing named as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. These are east flowing rivers, whereas the west flowing rivers are present which are Narmada, Tapti, Sabarmati, Luni. ये सब रिवर विषय रे आमे हम नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कस करबा, but today we will discuss about the east flowing rivers. So let's start with first river, but that is Damodar river. Okay, so Damodar river originates from Palamu hills of Chotnagpur plateau.
कोड सेटा ओरिजिन हेची बा तार ओरिजिन सोर्स होची पालामू हिल ऑफ छोटनागपुर प्लेट्यू एंड इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स दैट आर झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया, देन जॉइन्स इट हुगली रिवर इन हुगली डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। तो देखंतु दिस इज आवर दामोदर रिवर, this is the Damodar river. See, it starts from the Palamu hills which is present in our Jharkhand. Okay, छोटनागपुर प्लेट्यू रो पालामू हिल एटा सोर्स बा ओरिजिन हेचे एंड मीट्स टू हुगली रिवर इन कोलकाता। ओके, कोलकाता रे हुगली रिवर माने जोटा कि गोटे डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इन आवर गंगा रिवर सिस्टम वी डिस्कस्ड अबाउट द हुगली रिवर। सो गंगार जो डिस्ट्रीब्यूटरी अच्छी बा शाखा नदी हुगली रिवर सहित से मिसी कौटी हुगली डिस्ट्रिक्ट कोलकाता रे, तापरे बे ऑफ बेंगल रे ड्रेन आउट होइछि। तो सेटा स्टार्ट होइछि हमर दामोदर रिवर कोटू ना पालामू हिल एंड ड्रेन्स टू बे ऑफ बेंगल एंड मिक्स विथ द हुगली रिवर इन कोलकाता। ओके, सो the major tributary of Damodar river are Barakar, Konar, Jamunia, Nunia and Sali. Okay, these are the major tributary. There are also so many tributaries present, but I will say the major tributary that are Barakar, Konar, Jamunia, Nunia and Sali. Another thing about the Damodar river which is very important, this river is called a sorrow of Bihar. एटा को sorrow of Bihar कहा जाए जेहेतु प्रति वर्ष एटा बन्या होता है ये दामोदर रिवर बा दामोदर नदी रे बन्या होता है कोठी होता है सेटा बिहार रे होता है। ओके, तो जेहेतु एटा प्रति वर्ष हमर फ्लो माने फ्लड हुए बिहार रे, तो इट इज कॉल्ड अ sorrow of Bihar। एंड जितेबले बिहार रे बन्या हुए इट ऑल्सो अफेक्ट टू वेस्ट ऑफ बेंगल। सो वेस्ट ऑफ बेंगल आउ सरो आउ बिहार रे भी बन्या होता है। तो बेसिकली एटा कहा जाए सरो ऑफ बिहार। आउ गोटे जिनस आम जानवा दामोदर रिवर रे देयर आर 4 मेजर डैम्स आर प्रेजेंट नेम्ड एज तिलाया, माइथन। आम जानले से तार ट्रिब्यूटरीज अच्छे बाराकर, कोना, जामुनिया, नुनिया, साली। सो जो बाराकर रिवर अच्छी से दुईटा डैम होती जोटा कि तिलाया एंड माइथन। सी इन दिस मैप विल डिस्कस दिस इज आवर तिलाया, Maithan. These are present on Barakar river. Okay, and another is our Konar which is present in our Konar river. Konar is a tributary of Damodar river and the another is our Panchet on river Damodar. Damodar is Panchet dam, Konar river is Konar dam and Tilaya and Maithan on Barakar river. See, this is other river basin. It means the आमर जो दामोदर नदीर बेसिन एरिया होची एटा जोटा बेसिकली होची झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ओके, आउ या ऊपर जो चारटा डैम होची तिलाया, कोनार, माइथन एंड पांचेट। आराम से मन रही जिवो ए चारटा जाक। देखंतु मेजर सिटीज ब्यारेज मध्य अच्छी दुर्गापुर ब्यारेज अच्छी, तापरे आउ हमर मेजर टाउन माने कौन प्रेजेंट अच्छी कोलकाता प्रेजेंट अच्छी, बर्धवान प्रेजेंट अच्छी। सो दीज आर सम माने basic major cities or the dams present in here. See in this is our Dhanbad, this is our dams. We'll discuss about the major dams. This is our Damodar river originates from Palamu hill and meets to Hugli at Kolkata. Okay, this is the basin area of Damodar river in India. India रे हमें देखिए भाई इटा को एरिया रे प्रेजेंट अच्छे। This is the Damodar river basin. Okay, so this is about the Damodar river. So in the next we'll discuss about our Subarnarekha river. Subarnarekha river आमे समस्ते जानिचे कारण एटा हम ओडिसा रे मध्य फ्लो होउची। तो नेक्स्ट आमे देखिबा Subarnarekha river. See, Subarnarekha originates from Chotnagpur plateau. Damodar river भी Chotnagpur plateau ରୁ originates and Subarnarekha also originates from Chotnagpur plateau. Damodar originates from Palamu hills, Palamu, where it originates near Ranchi, Chotnagpur near Ranchi, is the capital of Jharkhand. Okay, Jharkhand ର capital ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାଞ୍ଚି। ତ ସେଠୁ origin ହେଇଛି and it flows through Jharkhand, West Bengal, Odisha. The Damodar river flow in the Jharkhand, Bihar and West Bengal, where it flows in Jharkhand,
West Bengal and Odisha, and it drains the joins to Bay of Bengal near Talsari beach of Baleswar. आमे समस्ते जेहेतु आमे ओडिशा रो आमे समस्ते बहुत भल भाव परिचित बालेश्वर सहित। तो बालेश्वर जो तलसारी बीच अच्छी तलसारी जो मुहाण अच्छी से जगह सुवर्णरेखा नदीटा मिसी बे ऑफ बेंगल सहित। क्लियर बे ऑफ बेंगल रू आमे जानिले जे सुवर्णरेखा रिवर मीट्स टू बे ऑफ बेंगल एंड इट ओरिजिन फ्रॉम छोटनागपुर प्लेट्यू नियर रांची व्हिच इज द कैपिटल ऑफ आवर स्टेट झारखंड। Another thing, the major tributaries of Subarnarekha are Kharakai, Kanchi, Garu, Dulang. These are some major tributary of Subarnarekha river. Okay. There are also so many tributaries present, but we will discuss about some major tributaries. Another thing about this, there are 2 dams and 2 barrages on this river present, which are present in Jharkhand district. Okay, sorry, Jharkhand state. तो Jharkhand state रे चांदली इच्छा दीटा डैम आउ खराकाई एंड गालुडिया दीटा barrage present अच्छी. Another thing is most important, it is very important from our exam point of view. Hundru Falls is a waterfall. Hundru named as Hundru located in Ranchi present along this river. तो सुवर्णरेखा रिवर रे गोटे वाटरफॉल अच्छे जार नेम होची हुंड्रू फॉल आउ दुईटा आमर डैम प्रेजेंट अच्छी चांदिल एंड इच्छा एंड दुईटा बैरेज प्रेजेंट अच्छी खराखाई एंड गालुडिया। देखंतु इथे हमें देखिबा दिस इज आवर चांदिल डैम, दिस इज आवर खराखाई बैरेज, इच्छा डैम and Galudiya barrage. Okay, these forts present in our Jharkhand state. Okay, Jharkhand state present अच्छे देखंतु एटा होचे हमर बॉर्डर दिस लाइन देखि पारुथिबे ए जो डॉटेड लाइन टा तो बिलो दिस इट इज ओडिशा एबव इट इज झारखंड। ओके झारखंड रे दीटा ड्रेन आउ दीटा डैम आउ दीटा बैरेज प्रेजेंट अच्छी आउ तापरे सीटा ओडिशा रे के बालेश्वर निकट रे तलसारी जो अच्छी तलसारी बीच रे बे ऑफ बेंगल से तो मिसी आउ एथिरे को वाटरफॉल अच्छी हुंड्रू वाटरफॉल। ओके सो दिस इज अबाउट आवर सुवर्णरेखा रिवर। सी दिस इज द सुवर्णरेखा एरिया प्रेजेंट इन इंडिया इन दिस एरिया। Okay, so next is our Mahanadi river. See, the Mahanadi river originates from Sihawa, Dandakaranya, Chhattisgarh. It flows through Chhattisgarh and Odisha. Okay, किंतु यार river basin टा किछि present अछि हमरा मध्य प्रदेश रे। Okay, river basin area टा किछि area present अछि मध्य प्रदेश रे, but it mainly originates from Sihawa. Okay, बात ताकू देखंतु मैप रे दिस इज आवर सिहावा बा धमतरी डिस्ट्रिक्ट। इट originates from here and meets to Bay of Bengal in Odisha. So in which state it flow? It flows through Chhattisgarh and Odisha, then fall into Bay of Bengal at Falls Pond, Jagatsinghpur. आमे जानले सुवर्णरेखा रिवर टा बालेश्वर तलसारी बीच रे बे ऑफ बेंगल रे फॉल हेछि, किंतु एटा फॉल्स पॉइंट जगतसिंहपुर रे आमर बे ऑफ बेंगल मिसी एंड बाय फॉर्मिंग ए डेल्टा इट फॉर्म्स ए डेल्टा। ओके another thing is the major tributary of Mahanadi are Sionath, Jong, Hasteo, Mand, Ib, Om and Tel. Okay, these are some left and right tributaries: Sionath, Jong, Hasteo, Mand, Ib and Om and Tel. Okay, the famous dams, that is our Hirakud dam, which is present in the Sambalpur district present is Hirakud dam, which is the longest dam in the world. It is very important. The longest dam in the world is our Hirakud dam, which is about 27 km in length. 27 km in length and present in the Sambalpur district. The tallest waterfall of Odisha, that is Khandadhar waterfall, that is present in our Sundargarh district, present along this river. तो महानदी रिवर विषय में बेसिकली कौन कौन पॉइंट जानले एटा ओरिजिन है जी सिहावारू जोटा छत्तीसगढ़ रो flows through Chhattisgarh and Odisha, meets to Bay of Bengal at Falls Point, Jagatsinghpur. The major tributaries भी discuss कले आउ important दीटा जिनस होचे the tallest waterfall of Odisha, that is Khandadhar waterfall, present along this river which is present in Sundargarh
डिस्ट ओके सुंदरगढ़ डिस्ट जो अच्छे खंडाधर वाटरफॉल से खंडाधर वाटरफॉलटा हूँ ओडिशार टॉलेस्ट वाटरफॉल जोटा महानदी रिवर प्रेजेंट अच्छे आउ कौन प्रेजेंट अच्छे हीराकुद डैम व्हिच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड ओके तो महानदी रिवर आम समस्त हीराकुद डैम विषय परिचित अच्छे सी दिस इज द फ्लो ऑफ आवर महानदी रिवर दैट दिस इज आवर हीराकुद डैम रे इट एंटर्स टू ओडिशा देन हीराकुद डैम प्रेजेंट इन संबलपुर देन अनुगुल कटक भुवनेश्वर पारादीप होगी पारादीप ये जो फॉल्स पॉइंट अच्छे जगतसिंहपुर इट मीट्स टू बे ऑफ बेंगल एंड इट फॉर्म डेल्टा सी दिस इज द डेल्टा एरिया ओके डेल्टा मीन्स जिते नदीटा छोट छोट शाखा नदी विभक्त हो जाए आउ छोट छोट शाखा हो जाए से गोटे बड़ गोटे रिवर बेसिन एरिया फॉर्मेशन करता है दैट इज कॉल्ड इज आवर डेल्टा ओके so this is the Mahanadi river this is the river basin of Mahanadi see this area the red area is the Mahanadi river basin this is the major tributaries that are Seonath then Jonk Hasdeo Mand Ib Ong Tel okay these are some major tributaries आराम रे मन रही जबो Seonath Jonk Hasdeo Mand Ib Ong Tel सरला तापरे कौन कौन ए प्रेजेंट अच्छी टिकरपड़ा खैरमाल एगुड़ाक सब आमर प्रेजेंट अच्छे आ मेजर महानदी विषय मन रखार अच्छे हीराकुद डैम आउ आमर खंडाधर वाटरफॉल ओके नेक्स्ट इज आवर गोदावरी रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर द गंगा हूँ आमर इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर जोटा कि प्रेजेंट अच्छे आम नॉर्थ इंडिया रे बट द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम रे साउथ इंडिया रे प्रेजेंट अच्छे गोदावरी रिवर व्हिच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ओके सो इट इज कॉल्ड एज दक्षिण गंगा गोदावरी रिवर को इंडिया रे दक्षिण गंगा बोली कह जाए जेहेतु एटा द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एटा कोडू स्टार्ट होइछि महाराष्ट्र त्रयंबकेश्वर रे okay it originates from Trimbakeshwar Maharashtra see this is the origin okay in this is the origin Maharashtra Trimbakeshwar ro okay and drains it to the Bay of Bengal at Sagar Sangam in the Andhra Pradesh on east coast जो present है Sagar Sangam दीटा important जिनस मन रखिबार अछि first it originates from Mahabaleshwar sorry it origins from Trimbakeshwar Maharashtra and drains to Bay of Bengal okay महाराष्ट्र त्रयंबकेश्वर origin है और बे ऑफ बेंगल में मिसी and it flows through states that are Maharashtra छत्तीसगढ़ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश को स्टेट रे महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश सो it drains it also form a largest river basin of India okay river basin largest India रो गोदावरी river formation करछि आउ गोटे जिनस होछि एटा को हमें दक्षिण गंगा बोली कहउछे द मेजर ट्रिब्यूटरीज बनगंगा कडबा प्रणहिता इंद्रावती साबरी धारणा नसरदी सिंधपन्हा मंजीरा इंपोर्टेंट एथरो किछि मन रखिबार अछि मेन बनगंगा कडबा प्रणहिता इंद्रावती साबरी धारणा ये सब हूँ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर आउ गोटे कथा होची इट इज द हाईएस्ट ऑल रिवर बेसिन ऑफ इंडिया आम इंडिया रे जतिके भी रिवर बेसिन अच्छी से हाईएस्ट रिवर बेसिन फॉर्मेशन करछि कि गोदावरी रिवर देयर आर 350 मेजर एंड मीडियम डैम्स and barrages are present along this river so major waterfall कौन कौन अच्छी चित्रकूट तीर्थगढ़ सहस्रकुंड एंड कुंतला दीज आर मेजर वाटरफॉल ऑफ द गोदावरी रिवर विषय मन रखिबार इंपोर्टेंट होची इट ऑरिजिन्स फ्रॉम त्रयंबकेश्वर एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बेंगल एट आंध्र प्रदेश एंड इट फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ तेलंगाना आंध्र प्रदेश इट इज कॉल्ड एज द दक्षिण गंगा एंड दीज आर द ट्रिब्यूटरीज एंड द मेजर वाटरफॉल्स आर चित्रकूट तीर्थगढ़ सहस्रकुंड एंड कुंतला सी दिस इज द flow of Godavari river see starts from Maharashtra and drains at Andhra Pradesh at Kakinada and Machilipatnam आमे समस्त बहुत भल भाव परिचित काकीनाडा और मछलीपट्टनम सहित तो इट फ्लोज लाइक दिस द मेजर स्टेट्स आर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ and Andhra Pradesh okay these are the tributaries see
पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, भीमा, इंद्रावती, साबरी. Sabari ta also some parts of Sabari present in our Odisha. Okay, Koraput district. Sabari. This is our Bansdhara. It is present in Odisha. But the major tributaries are Sabari, Indravati, Wardha, Penganga, Manjira and Bhima. The major cities also see. This is our Maharashtra. This is Karnataka, Andhra Pradesh, and this is our Chhattisgarh. Okay. So this is the river that is Godavari river. Okay, Godavari river ro एटा होची आमे जानिले जे तार शाखा नदी विषय बा तार उपनदी विषय जानले तार कौन कौन सब स्टेट आछुदा रिवर भितर जानले आउ आमे जानिले जे कौन कौन सब वाटरफॉल प्रेजेंट अछि. ओके, नेक्स्ट इज आवर कृष्णा रिवर. कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट नियर महाबलेश्वर. सेटा भी हमर वेस्टर्न घाट रो को रिवर गोदावरी रिवर वेस्टर्न घाट त्रयंबकेश्वर ओरिजिन होइछि एंड इट आल्सो ओरिजिन फ्रॉम द महाबलेश्वर दैट इज इन आवर वेस्टर्न घाट्स एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बेंगल एट सागर संगमम इन आंध्र प्रदेश. इट ड्रेन्स एट सागर संगम. सी दिस इज आवर आंध्र प्रदेश स्टेट. आंध्र प्रदेश. ओके, आंध्र प्रदेश स्टेट रो सागर संगमम रे बे ऑफ बेंगल ले मिसिछि और ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर that is in our Maharashtra state. In the picture we can see the tributaries are Bhima, Dindi, Halya, Musi, Muneru, Tungabhadra, Malprabha, Ghatprabha, Panchganga, Koyna. These are some tributaries, left tributaries and right tributary. The right tributaries are Koyna, Panchganga, Ghatprabha, Malprabha, Tungabhadra, whereas the left tributaries are Bhima, Dindi, Musi, Halya. Okay, this is the basin area of Krishna river. See, it originates from Maharashtra, Western Ghat, near Western Ghat, and drains in the Andhra Pradesh. The place is named as our Sagar Sangamam, and the major cities are present. Our Vijayawada and Andhra Pradesh, so many cities are present. Okay, so two major dams, that is our Sri Sailam and Nagarjuna Sagar, are constructed across this river. So dam duita kon kon achi major? One is our Sri Sailam dam and the another is our Nagarjuna Sagar dam. So next is our the major waterfall of these rivers are Ithipothala falls, Manikyadhara fall, Ghattaprabha fall and Kalhati fall. कौन कौन वाटरफॉल अच्छी? एथिपोथला फॉल, माणिक्यधारा फॉल, घटप्रभा फॉल एंड कालहाटी फॉल. ओके, सी. सो दिस इज अबाउट आवर कृष्णा रिवर. द लास्ट और द नेक्स्ट वन इज आवर कावेरी रिवर, which is our peninsular east flowing river. Kaveri river originates from Talakaveri in the Brahmagiri range of the Western Ghat. It also originates from the Western Ghat from Talakaveri, which is present in Karnataka. Okay, Karnataka ro Kodagu district re eta start ହେଇଛି. Okay, Karnataka Kodagu district, but the Krishna and the Godavari originates from Maharashtra, but Kaveri originates from Karnataka, flows through Karnataka and Tamil Nadu, drains into Bay of Bengal at Pumpuhar, which is present in our Tamil Nadu state. Tamil Nadu state रे Pumpuhar रे एटा Bay of Bengal से तो mix ହେଇଛି, किंतु आमर कृष्णा river कोठी mix ହେଇଥିଲା? सागर समुद्र. Okay, so it is at Pumpuhar, Tamil Nadu state re meets to Bay of Bengal. The major tributaries are Hemavati, Amaravati, Akravarti and Moyar. And the famous waterfall that we know all is the Shiva Samudra waterfall. Shivan Samudra waterfall एटा प्रेजेंट अच्छे कोटी कर्नाटक रिवर रे, जोटा कि कर्नाटक स्टेट रे, जोटा कि कावेरी रिवर रे प्रेजेंट अच्छी. आउ द मेजर डैम होची कृष्णारा सागर डैम, हेमावती डैम, हरंगी डैम, कावेरी डैम, अमरावती डैम, बनेश्वर सागर डैम. आमे एथरो यार ट्रिब्यूटरी रो ही मन रखि परिबा. देखंतु अमरावती डैम, अमरावती रिवर, हेमावती डैम, हेमावती रिवर and Krishnaraja Sagar Dam. Major dams we have to remind: Krishnaraja Sagar Dam, Hemavati Dam, Kabini Dam, Amaravati Dam and Banasara Sagar Dam.
And the another thing about Kaveri river is our Kaveri river dispute between Karnataka and Tamil Nadu for sharing the water of Kaveri river. Kaveri river रो जल माने पानी जो फ्लो होउची से पानी को लेके दीटा स्टेट भीतर डिस्प्यूट चली वन इज आवर कर्नाटक एंड अनदर इज Tamil Nadu, okay, and it flows through Karnataka and Tamil Nadu state. So this is something about the Kaveri river. See, this is our Kaveri river. Starts at the Tala Kaveri, Kodagu district of Karnataka, and ends in the Pumpuhar, that is in Tamil Nadu. It also forms a delta. It flows through, this is Karnataka and this is Tamil Nadu. This is the basin area of Kaveri river. See, here it Tala Kaveri origin from the Tala Kaveri and ends in Pumpuhar of Tamil Nadu. So this is about our Kaveri river. So in this video we discussed about the peninsular river system, that is our east flowing rivers, that are the Damodar river, Subarnarekha, Brahmaputra, Damodar, Subarnarekha, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. First is our Damodar river, originates from Palamu hill and ends with the Hugli district, meet to Hugli river, which is a distributary of Ganga river, and it is called as Saurav Bihar, and the major dams are Tilaya, Maithan, Panchet and Konar. Next is our Subarnarekha river, originates from Chotnagpur plateau and meets to Bay of Bengal at Talsari beach, Baleswar. The two major dams are Chandili and Icha, and the Kharakai and Galudia are two barrages, and Hundru waterfall is also present along the Subarnarekha river. The next is our Mahanadi river, origin from Sihava, that is near Dandakaranya in Chhattisgarh district, and ends or meets to Bay of Bengal at Falls Point, Jagsinghpur. And the major 2 point or the important 2 point about Mahanadi river is our Hirakud dam, which is the longest dam in the world with 27 km, and the Khandadhar waterfall, which is the tallest waterfall Odisha, present along this river. Next is our Godavari river system, that is called as our Dakshina Ganga, which is the second longest river of India. Its origin from Troyambakeswar and meets to Bay of Bengal, okay, and Chitrakuta, Tirthagada, Sahasrakunda, Kuntala are major waterfalls present along this river. Next is our Krishna river, origin from Mahabaleshwar. It also originates from the Maharashtra state and meets to Bay of Bengal at Sagar Sangamam. Okay, Srisailam and Nagarjuna Sagar are constructed across the river. आराम से मन रही जब श्रीशैलम ये मंदिर भी अच्छे श्रीशैलम रे और नागार्जुन सागर आमे माने बेस परिचित ये दीटा ना सहित. तो कृष्णा रिवर बेसिकली फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, एंड मेजर वाटरफॉल्स आर इतिपोतला, माणिक्यधारा, घट्टप्रभा एंड कलहाटी. Last is our Kaveri river, which is originates from the Tala Kaveri, which is at the Kodagu district of Karnataka and ends at Pumpuhar to Bay of Bengal, which is present in Tamil Nadu state, and there is a Kaveri water dispute between the Karnataka and Tamil Nadu, and the major dams are Krishnaraja Sagar dam, Hemavati dam, Kabini dam, Amravati dam. आमे जदि ट्रिब्यूटरी मन रखिपा ताले से ना अनुसार आमे तार डैम्स गुड़ाक भी मन रखिपर. So this is the river area of Kaveri river. So this is about some points or some major rivers of our east flowing rivers of peninsular river system. In our next class we will discuss about the west flowing river of India with this some questions from peninsular river system, and we will discuss about the difference between estuary and deltas. Okay, so thank you all. जदि आपण मानको मो वीडियो भल लागि then please like, share and subscribe my